Hello and welcome to another episode of Kalpavruksha Learning. The last video that we uploaded on the channel was on the chapter Coordinate Geometry, chapter number 7, NCERT class 10th. Today we are going to continue the chapter with some solved examples. The examples that I'm going to solve are from the board exams which have appeared in 2024 and 2025. I will be mentioning the years of the questions as well. Let's start. Starting off with the first question, the question is AD is a median of triangle ABC. Starting off, एक triangle है A, B and C. And when we say median, median is basically any perpendicular dropped on a line which divides the line in the same fraction. Okay, so D का मतलब होता है BC को equally divide करती हुई एक line. It says AD is the median of triangle ABC with vertices A as 5, minus 6. 5, minus 6. The next point is B 6, 4. C 0, 0. अगर हम 0, 0 को ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाता है कि दिस विल बी द वर्टेक्स, व्हिच मींस दैट जहां पर भी ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज बेसिकली द वर्टेक्स एंड ये ट्रायंगल कहीं फॉर्म हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टुवर्ड्स द upright of the second quadrant, right? Now let's understand 6, 4. 6, 4. It is forming on the other side of the triangle, which means on the first quadrant. This is on the first quadrant. And this is 5, 6. All right, never mind. Okay. Okay, so 0, 0 being the origin. Now let's start. Let's understand what is the question asking us to do. Length AD is equal to. Length AD is equal to. Now what did we come to know? We came to know that BD जो होगा आपका will be equals to CD, correct? BD will be equal to CD. क्यों? क्योंकि ये मीडियन है और इस लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा होगा, करेक्ट? Not to forget, this question appeared in the board examination of 2024. So just highlighting the same. BD is equals to CD. Let's understand what it is. Okay, so by the midpoint formula x and y को कैलकुलेट करेंगे हम लोग. Midpoint formula का मतलब होगा x is equals to 6 minus 0 divided by 2 is equals to 6 by 2 is equals to 3 and y will be equal to 4 minus 0 divided by 2 is equals to 4 by 2 is equals to 2, which means my x becomes 3, 2, right? And what do I have to calculate? I have to calculate AD, which means I have to use the distance formula. The distance formula used will be AB AD is equal to 5 minus 3 का square plus minus 6 minus 2 का square, which becomes 5 minus 3 is equals to 2 का square 4 plus minus 6 minus 2 is 8. 8 8 is 64, which becomes 68. Yes. So the question asked us to drop a median on the base, find out the midpoint के coordinates, and finally the distance. Here is the question, right? Moving on, I'll just explain what the concept here has been used. There has been used two concepts. First, हमने जो तीन concepts पढ़े थे, the first is the distance formula that we have used. The second is the my bad, just going a little back. First, we have used the midpoint formula, and secondly, we have used the distance formula. Two formulas used in one question to first figure out the coordinate and then figure out the distance. Moving on to the second question. The second question that we are going to solve is again from the same board examination 2024. So we'll just see what is the question.
All right. So the next question that we are going to solve is, if the distance between the points 3 comma minus 5 and x comma minus 5 is 15, then the values of x are. So 2 points have been given. Say I am saying that there is a point 3 comma minus 5 and there is a point b x comma minus 5. Right? Now, what we are going to say is that if the distance between the points this and this is 15 units, basically, अगर मैंने बोला है कि AB is equals to 15, which means 3 minus x का square plus minus 5 plus 5 का square is equals to 15. Right. So my question says there are 2 points A and B. A है 3 comma minus 5 and B है x comma minus 5. The question is AB is equals to 15, 3 minus x का square and यहाँ पे होगा 15 का square. Sorry, 15. To remove the square root, what we will do is this will become 3 minus x का square plus this will become 0 का square. Basically 0 is equals to 15 का square. 15 का square becomes 225. इसको expand करेंगे, this will become 9 plus x square minus 6x is equals to 225. Now this becomes x square minus 6x. 225 minus 9. 225 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 1, 216 minus 216 is equals to 0. Right? So what did we do? All right. So the next question that we are going to pick up is also from board 200. Is also from board 2024. So we will start with the question. The question is, if the distance between the points 3 comma minus 5 and x comma minus 5 is 15, then the values of x are. So let's first understand what are the 2 points. The 2 points are 3 comma minus 5 and the B point is x comma minus 5. राइट दो पॉइंट्स है मेरे पास मैंने बोला है कि ए बी का जो लेंथ है दैट इज 15 राइट अगर ए बी का लेंथ जो है वो 15 है सो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से ए बी का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 15 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर is equals to 225, which is 15 ka square. This will become 0, hence no value. X square plus 9 minus 6x is equals to 225. Now this becomes x square minus 6x minus 225 minus 9. So 225 minus 9 becomes 216 is equals to 0. 216 को अगर हम फर्दर ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने में वी गेट टू प्राइम नंबर्स वन बेसिकली द टू प्राइम नंबर्स यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 216 को ब्रेक करेंगे जिसका डिफरेंस जो है वो 6 आएगा विल बी 18 and 12 करेक्ट 18 and 12 18x plus 12x minus 216 is equals to 0 x minus 18 plus 12x minus 18 is equals to 0. So this becomes x minus 18 x plus 12 is equals to 0. So either x will be equals to 18 or minus 12. Right? x की आपकी दो वैल्यूज आएंगी एक आएगी या तो 12 एक आएगी minus 18. Correct? Questions are pretty simple. It's just that we need to figure out the correct formula that needs to be used. So एक snapshot भी मैं डाल दूंगी आप
आपके रिमेंबर करने के लिए ऑन द यूट्यूब एज अ पोस्ट बेसिकली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट इमेज एंड जस्ट बुक मार्क इट इन योर desktop, laptop, phone, wherever, whatever device you are using to watch these videos, so that these formulas are always on the top of your mind. Also, if you follow us on the Instagram channel, you will be finding posts that will be going very, very soon on all the formulas that I am explaining here, so that it becomes easier for you to communicate and also engage with the videos on the Instagram channel. Moving on to the next question. The next question also that I will be picking up will be from the board 2024. So I will just let that question be, that tag be here. We'll try to solve as many questions as possible in this video, but we will ensure that this video doesn't get boring for you all and it doesn't crosses the threshold of your patience. Moving on to the next question. The question says, the center of a circle is at 2, 0. If one end of the diameter is at 6, 0, then the other end is at, right. So we will understand there's a circle and there's a center, and the center is 2, 0. Right? This is A and this is B and this is C. Correct? Now A, B and C. A, B and C में हमें बोला गया है the diameter is at 6, 0. If one end of the diameter is 6, 0, say this is 6, 0, then if one end is then the other end is. So basically यहाँ पर भी मुझे सेम काम करना है क्योंकि ये रेडियस है which means ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पर which means हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि 2 should be equal to x plus 6 divided by 2 which will give you x is equals to 4 minus 6, x is equals to minus 2. Then you will have 0 is equals to y plus 0 divided by 2 which means y is equals to 0. मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर y 0 है और x minus 2 है मतलब ये पॉइंट जहां ये कोऑर्डिनेट जहां पर भी आपका लाई करता है ना दिस इज ओनली ऑन द x एक्सिस जहां पर y is equals to 0 and x is minus 2. Also this coordinate is lying on the second quadrant. If you see this is minus 2 which means we are moving towards the left hand side of the number line and we are staying on the neither we are down neither we are up, so basically we are somewhere in the second quadrant, right? Moving on to the next question. Okay, the next question that we are going to take is also from 2024. All right, 2024, another question. Here it goes. XOYZ is a rectangle with vertices x minus 3, 0, O 0, 0, Y 0, 4, Z x, Y. The length of each of its diagonal is. Okay, XOYZ. X, O, Y and Z is a rectangle. X, O, Y, Z is a rectangle. X is minus 3, 0, minus 3, 0. O is 0, 0. Basically, ये origin है. And Y is 0, 4. This is lying on the y-axis, 0, 4. And Z is x, y. X, y. ठीक है मुझे पता क्या लगाना है मुझे पता लगाना है लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स डायगोनल इज ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक रेक्टेंगल है जब हमने कल अपना बेसिक्स पढ़ा था इस चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सो वी फिगर्ड आउट दैट अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स दोनों सेम होते हैं सेम लेंथ के होते हैं व्हिच मींस दैट एक्स वाई विल बी इक्वल टू ओजी राइट एक्स वाई विल बी इक्वल टू ओजी मतलब यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं तो एक्स वाई का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू ओजी का स्क्वायर ये हमारा अजम्पशन है ठीक है इसको पार्क करते हैं नाउ लेट्स अंडरस्टैंड और कोई इंफॉर्मेशन हमें दी गई है यहाँ पर नो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है व्हिच मींस दैट दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर अस टू कैलकुलेट दिस नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अगर एक्स ओ जी और एक्स वाई की वैल्यू सेम है व्हिच मींस कि अगर हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो x और y की वैल्यू आएगी
minus 3 minus 0 is का square plus 0 minus 4 का square, which will give you minus 3 का square मतलब 9 plus minus 4 का square मतलब 16, which means it is 25, which means this is 5. मतलब एक्स वाई और ओ जी दोनों की ही लेंथ 5 यूनिट्स है, करेक्ट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन. सो बैक टू बैक जो मैंने क्वेश्चंस अभी के लिए आपके लिए पिक किए हैं वो 2024 बैच के हैं. आई विल ट्राई टू पुट इन मच मोर क्वेश्चंस, बट 2024 के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रेलिवेंट और कैचिंग है. अगर आप इस पे थोड़ा सा फोकस करते हो तो फंडामेंटल्स कैन गेट क्लियर इजीली. And questions more or less same ही रहते हैं, just the language might differ a little here and there. Okay, moving on to the next question. The next question is the distance between the points is a cos theta and minus a sin theta. Now this is interesting. Okay, why interesting I would say is that because trigonometry is a chapter we haven't started for class 10th curriculum yet. We have studied those chapters in class 9th, class 8th, but we have not started it in class 10th yet. So basically this would be the first time we will be using a trigonometric formula here in any question. So let's understand, let's look at it very carefully. Minus a sin theta, comma, minus a sin theta. Let's say this is a and the b point is a sin theta and a cos theta. Right? Now let's understand. ओके, क्वेश्चन मोरलेस सेम है. आपके सारे ही क्वेश्चंस बेसिकली जब भी होंगे तो आपके 3 फॉर्मूला के इन एंड अराउंड ही होंगे. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट दैट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू फ्रॉम दैट पॉइंट. ठीक है, या तो आपका मिड पॉइंट पे क्वेश्चन आस्क्ड होगा या तो फिर आपका सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चन आस्क्ड होगा विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर मिड पॉइंट फार्मूला, या फिर आपका डिस्टेंस पे फार्मूला बेस्ड होगा. ये क्वेश्चन अगेन हमारा डिस्टेंस पे बेस्ड है. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए और बी का डिस्टेंस पता लगाओ. तो डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर, which will become AB is equal to a square cos square theta plus a square sin square theta minus 2a sin theta cos theta. Right? Moving on to the next part. Next part becomes plus a square sin square theta plus a, my bad, a square cos square theta, एंड सिंस दोनों ही माइनस है आइडियली यहां पर हो जाएगा प्लस प्लस 2a sin थीटा cos थीटा. राइट? Okay, so a square cos square theta, a square cos square theta, which will give you 2 times of a square cos square theta. Correct? ये done. a square sin square theta plus a square sin square theta मतलब कि 2 times a square sin square theta. This is done. Now minus 2a sin theta and plus 2a sin theta gets nullified. मतलब आंसर आया मेरा AB is equals to underscore 2a square cos square theta plus sin square theta. Cos square theta plus sin square theta की वैल्यू होती है 1. This is a fundamental rule. Going by that logic, AB becomes under root 2a square, which ultimately becomes under root 2a. So your length of AB is under root 2a.
right? Done. So these were all the many questions that I could take from batch 2024. Now there are a couple of questions जो मैंने pick किए हैं, which are not from the board examinations, but I just thought they would be relevant for me to explain here. You can skip the rest of the part of the video if you think that you don't want to go beyond your board questions, but I just thought that they are very quirky questions which can easily help you out in understanding the logics. All right, let's understand. Question है, in what ratio a line segment joining the points 3 comma minus 5 and minus 1 comma 6 divided by the line y is equals to x. ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, हम लेते हैं 3 कॉमा माइनस 5 ए, 3 कॉमा माइनस 5 बी, माइनस 1 कॉमा 6, राइट. ए एंड बी दो पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है. अब हमको ये बोला क्या जा रहा है, हमको बोला जा रहा है कि एक ओके, व्हाट रेशियो is the line segment joining the points this and this divided by the line y is equals to x. एक लाइन है y is equals to x. Do we know what sort of a line will this be? जहां पर x और y दोनों सेम हैं. ये लाइन हर वो कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगी जहां पर भी आपका x, y दोनों सेम होगा. 6, 6, 4, 4, 2, 2, 3, 3, 0, 0. Any of these lines will be equal to x equals to y. This can also be represented as x minus y is equals to 0. This is basically a equation representing a linear graph, right? Now let's understand. हमें बोला गया है कि अब फाइंड आउट करो यहां पर what is the ratio of the line segment joining the points. ओके, हमें बोला जा रहा है कि y is to x का तो ये फॉर्मूला है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली. अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर एक कोई पॉइंट होगा ऐसा जो कि इसका मिड पॉइंट होगा, से o x, y होगा. क्या है वो पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है? अब ये सिर्फ ये बोला है कि ये डिवाइड कर रहा है, कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि ये इसका मिड पॉइंट है. करेक्ट. तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो होता है, हमने क्या पढ़ा था कल कि दिस बिकम्स एन एंड दिस बिकम्स एन. m और n में रेशियो में हम डिवाइड करते हैं इसको. तो यहाँ पे इजियर अंडरस्टैंडिंग के केस में हम इसको ले लेते हैं एज टू नंबर्स. लेट m बी इक्वल टू k एंड लेट n बी इक्वल्स टू 1, राइट. तो मतलब ये हो जाएगा k एंड ये हो जाएगा 1, राइट. तो मेरा x कोऑर्डिनेट का जो बेसिकली फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो मेरा बनता है m इंटू x2 plus n into x1 divided by m plus n. Y is equals to m into y2 plus n into x2, sorry y1. My bad. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट करते करते आ जाएगा, राइट. x is equals to m x2, n is equals to n and m plus n divided by y is equals to m y2 plus n y1 divided by m plus n. Now let's understand. हमने क्या बोला था कि x is equals to y है, तो अगर x is equals to y है तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है और n की जगह पे k डालना है और n की जगह पे 1 डालना है. तो सेम काम करते हैं, n की जगह पे अगर हम k डालते हैं और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यूज भी लिख लेते हैं. So your x1 is equals to say suppose 3, your x2 is equals to minus 1, your y1 is equals to minus 5 and your y2 is equals to 6, right? Clear है? Now let's start. So होगा ये, m की वैल्यू हो जाएगी k, x2 will become minus 1 plus n की वैल्यू है 1, x1 will become 3 divided by m plus n, which means k plus 1, right? Which means this will be equated with m y2, m will become k, y2 becomes 6 plus n becomes 1
I'll just take this नीचे and then उसके बाद I'll extend. So m को मैंने बोला k और y2 is यहाँ पे 6, so basically 6 plus n की वैल्यू है 1, y1 is minus 5 divided by m plus n, which means k plus 1. सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों तरफ अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वी विल नलिफाई दैट. नलिफाई करने के बाद यहाँ पर बचता है हमारे पास माइनस के प्लस 3 इक्वल्स टू 6k माइनस 5. तो अगर मैं इस माइनस के को उस तरफ लेकर के जाऊं तो दिस विल बिकम 5k एंड इस माइनस 5 को इस तरफ लेकर के आऊं तो 5 प्लस 3 बन जाएगा 8, which will give me k is equals to 8 by 5. राइट मतलब दूसरे वाले पोर्शन को तो हमने 1 कंसिडर किया था, द k वाला पोर्शन कम्स एज 8 by 5. राइट all right. We will be taking up one more question which I will try and solve it for you. Now ये जो क्वेश्चन जो मैं पिक कर रही हूँ ना, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस. ये आपका क्वेश्चन सिमिलर टू योर सेक्शन फॉर्मूला ही है, बट दिस इज अ लिटिल इलैबोरेट, सो जस्ट अंडरस्टैंड ये कैसे है. कभी कभी क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, जब उस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो उस क्वेश्चन को कैसे रीड करना है वो बताना है मुझे पहले आपको. सो p इज इक्वल्स टू -2,5. आई स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड ऑफ द बोर्ड, आई होप दिस इज विजिबल, बट p इज -2,5, q is 3,2. p is -2,5 and q is 3,2. Now find the coordinates of the point r on pq such that pr is equals to 2qr. मतलब p and q पे कोई एक पॉइंट है, p and q पे कोई एक पॉइंट है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो रिलेशन बनता है मेरा pr is equals to 2qr. pr is equals to 2qr. करेक्ट. pr is equals to 2qr पे अगर हम बोले तो pr divided by qr is equals to 2 divided by 1. This is my ratio. राइट यहीं से क्वेश्चन को बिगिन करेंगे. क्वेश्चन को बिगिन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज, ऑलराइट हम क्वेश्चन को यहीं से बिगिन करेंगे. पी आर बाई क्यू आर बाई का वैल्यू हमें मिल गया 2/1. 2/1 का मतलब क्या हुआ, अगर हमने इस चीज को देखा जाए तो पी आर बाई क्यू आर मतलब इसका रेशियो मिल गया मुझे, m इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 1. इजंट इट सेम है, राइट. तो अगर मुझे ये रेशियो मिल गया है तो अब मुझे यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. सॉरी, द सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. हमारा x1 है, x1 is -2, y1 is 5, x2 is 3 and y2 is 2. राइट. सो हम निकालते हैं यहाँ पर x is equals to r के वैल्यूज निकालने हैं. सो x will be equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n. y is equals to m y2 plus n y1 divided by m plus n. Right? This is my expectations. अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. x क्या बनेगा, m क्या है मेरा 2, x2 क्या है -2, 2 into -2 becomes -4, n है मेरा 1, x1 है मेरा -2, सॉरी x2 क्या था, x2 is 3, right? Yes, so 2 into 3 6, 2 into 3 6, 1 into -2, 1 into -2 becomes -2 divided by m plus n. 6 minus 2 becomes 4, 4 divided by 3. y, m is 2, y2 is 2, 2 2s are 4 plus n 1 into y1 5, 5 1s are 5 plus 5
divided by 3, which means 9 divided by 3, which means 3. So basically x y का जो coordinate है x comma y will be equals to 4 comma 3 comma 3. Okay, so these are a couple of questions that जो कि मुझे लगे बहुत important थे from a point of view of your board examinations, and also a couple of them which I picked up from randomly from here and there. If there are any further questions that you would want me to solve, please engage in the comment section below and let me know if this has helped you and you would need more help in understanding a few more questions on the same lines. Right, I will pick them up. Also, as promised, I'll drop the formula chart as soon as possible on the YouTube channel. You can pick it up from there. Thank you for joining the video. We'll see you in the next video with a new chapter and new formula. Till then, bye bye.